They were kind enough, after extracting all the data that is inside this phone, they gave it back to me. मैंने बोला आप हमें हैश वैल्यू भी दे दीजिए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे कि इसके अंदर आपने कुछ डाला नहीं। बोला नहीं इतना क्यों चिंता कर रहे हैं, आपके सामने हम सब कुछ कर रहे हैं। ये इजराइल का सॉफ्टवेयर है, ये विश्व का सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर है। My father was in jail for participating in Gandhiji's Quit India movement. Yes, the most polluted, not just the suspended particulate matter in the atmosphere. It is one of the most polluted cities in the world. The minds of people are extremely polluted. एक संस्था का उपयोग, मैं कहूँगा दुरुपयोग कर, सिर्फ पत्रकार के मुंह बंद करने का कोशिश में है। All those who speak against the ruling regime, उनको सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं कि आप देशद्रोही हैं, you are traitors to the nation। तो वो भी मोदी जी से सवाल उठाया कि मोदी जी, मेरा ड्राइवर पूछ रहे हैं आपसे, आप आम कैसे खाते हैं, आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। So he who pays the piper calls the tune। तो अगर आपका पैसा आ रहा है ये बड़े बड़े, तो आप सिर्फ सरकार का गुणगान करेंगे, सरकार के खिलाफ आप सवाल नहीं उठाएंगे। Welcome to the fourth dimension. Here we explore the rather unspoken, unheard dimensions of our guests. और आज है हमारे साथ एक राइटर, एक जर्नलिस्ट, एक टीचर, documentary filmmaker, and a whole lot more. And it's all one person. And also he is a big pain in the neck and elsewhere for some of the world's most powerful and richest and most corrupt people. Mr. Paranjoy Guha Thakurta. Valli ji, thank you. Thank you very much. আমি ভালো আছি, मैं ठीक हूँ, और आपने इतना तारीफ किया तो लोगों का नजर लग जाएगा। So don't praise me such a lot. You go ahead and ask your questions. Tell me something. Do I speak to you in English or Hindi or both? We can do both. चलिए जी, मैं तैयार हूँ आपके लिए। आप शुरू कीजिए। So the last few weeks have been very eventful for you. जी हाँ, बिल्कुल जी। आपका फोन और लैपटॉप सुप्रीम लीडर ने वापस कर दिया? ये है मेरे पास। इसके अंदर एक सिम भी डाल है, मेरा अपना सिम का मतलब है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो उसी दिन वापस दे दिया उन्होंने। मगर मेरा भाग्य बहुत अच्छा है मेरा भाग्य, क्योंकि अभी भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में कम से कम 50 लैपटॉप है, लोगों का हार्ड डिस्क है, उनका ये सेलुलर फोन दूरभाष यंत्र है। किसी लोगों को सिम वापस दे दिया और फोन रख दिया। किसी लोगों का पासपोर्ट भी है दिल्ली पुलिस के पास। तो मेरा भाग्य अत्यंत अच्छा है। I have been extremely fortunate and lucky. They were kind enough, after extracting all the data that is inside this phone, they gave it back to me on the 3rd of October, a little before 6 p.m. 6 बजे के थोड़ा पहले। So do they return everything with the data, or do you have to keep backups कि कब पता नहीं कब कौन आ जाए? आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? इसके अंदर जितना सूचना है, शायद आपका व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया क्योंकि बाद में आया। बाकी सबका, हमारे टेलीफोन नंबर 5000 टेलीफोन नंबर है, सब उनके पास है। क्लाउड में जितने नहीं, वो ले तो लिया है, एक कॉपी तो उन्होंने ले लिया, बट यू गॉट एवरीथिंग बैक। हाँ, कॉपी कर लिया, सब कुछ कॉपी कर लिया। मैंने बोला आप हमें हैश वैल्यू भी दे दीजिए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे कि इसके अंदर आपने कुछ डाला नहीं। बोला नहीं इतना क्यों चिंता कर रहे हैं, आपके सामने हम सब कुछ कर रहे हैं। तो आई हैड टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटर्स। तो मैं उनको बोला ये हमारा फोन का जो क्या कहते हैं वो पासवर्ड है, ये मेरा आईफोन में पासवर्ड है,
So that was my way of cooperating with the investigators. मतलब ये दूरभाष यंत्र में एक आईफोन 7, इसके अंदर पेगासस भी शायद है. ये मेरे साथ काफी साल हो गया, लगभग 6 साल से ज्यादा हो गया. तो सारी चीजें, मेरे बीबी की तस्वीर है, मेरा बच्चे की तस्वीर है, मैं सारे जितने लोगों को टेलीफोन किया, इनके पास सब कुछ है. ऐसा कुछ बाकी नहीं. So Paranjoy, we can't know if the Pegasus is there or not. Is there a way of finding out? Oh my God, that's the subject of a 1-hour conversation. Wali, I don't want to start. The Honorable Solicitor General of India told the then Chief Justice of India more than a year ago, when he was asked a straight question, has any organization, any agency of the government of India purchased Pegasus or not? And the Solicitor General of India told the Chief Justice of India that he cannot answer that question or will not answer the question. I'm a petitioner. मैं भी अदालत चला गया, सबसे ऊंचा अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गया. पेगासस का कहानी एक लंबा कहानी है. आपका दर्शक के लिए, आपका श्रोताओं के लिए 1 घंटा समय लग जाएगा. मैं 1 घंटा का लेक्चर दे सकता हूं. ये पेगासस, ये इजराइल का सॉफ्टवेयर है, ये विश्व का सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर है. ये 2 फ्रेंच लोग, लॉरेंट रिचर्ड और सैंड्रीन रिगो, और इसका जो सुर्खिया, मतलब जो एकदम हेडलाइन, जो टाइटल है किताब का पेगासस, और सब टाइटल जो है द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस स्पाईवे. ये तो अलग विषय है. आप बुलाइए, आपके दर्शक को बुलाइए, हम 1 घंटा का लेक्चर दे सकता हूं. हमने अलग अलग जगह में दिया भी, तो हम देने के लिए कोई, ये बहुत लंबा कहानी है. हाँ, मेरा फोन, my phone is under surveillance and everything in it is with the authorities of the government of India, certainly with the special cell of the Delhi police. It was forensically examined thrice in the past. Oh, no. 5 times in the past, thrice in Europe and Canada, और एक बार कलकत्ता में और एक बार दिल्ली में. ये सुप्रीम कोर्ट, सबसे उच्च न्यायालय का जो एक समिति उन्होंने गठन किया था, उन्होंने ये सारी चीज, सारी सूचना उनके पास है, सारे तथ्य उनके पास है. इंट्रो में मैंने बोला कि वो डिमेंशन हम एक्सप्लोर करते हैं गेस्ट्स का, तो आप हमें बताएंगे कि आपके कैसे इन्फ्लुएंसेस रहे, व्हाट इन्फ्लुएंसेस मेक्स अ परंजॉय गुहा ठाकुरता. आपके बचपन के बारे में, वेयर वर यू बोर्न, लाइक was it a big city you grew up in? What sort of a world was it when you grew up? मेरा जन्म इसी शहर में, जहां से मैं आज बात कर रहा हूं आपसे, कलकत्ता शहर. मेरा माँ, मेरा पिताजी, वो भी है नहीं हमारे साथ. मेरा पिताजी का परिवार पूर्व बंगला, जो आज जिसका नाम है बांग्लादेश, शरणार्थियों के 30 के दशक में आए. मेरा माँ का भी जन्म ढाका में हुई थी, फिर चिटागोंग, चाटगा में बचपन में रहा. उन्होंने भी 40 का दशक में पश्चिम बंगाल का पश्चिम दिख आ गया. उस समय महामारी के बाद द ग्रेट बंगाल फैमिन 1943, विश्व युद्ध चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ऑन and the great Bengal famine was on. गोदाम में अनाज थे मगर लोग भूखे मर रहे थे. ये हमारे ब्रिटिश colonial rulers थे उस समय. So I grew up with stories of the Great Bengal famine, the Second World War, और फिर हिंदू मुस्लिम दंगा, the Great Calcutta killings. That's where I grew up. I mean, that is what I heard from my parents. My father was in jail for participating in Gandhiji's Quit India movement. His older brother joined the extreme left, the terrorists.
My paternal grandfather threw him out of the house when he found a gun under his revolver under his pillow. This is my father's older brother. They came from large families. So I was born in 1955. I was the oldest of 3 siblings, born and brought up in Kolkata. उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा और 75 और 77 के समय, इस समय 75 और 77 के बीच जब इमरजेंसी पीरियड था, इंदिरा गांधी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे, उस समय जो आपातकालीन समय मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा था और उसी समय मतलब हमारा क्लास चल रहा है, हमारा इम्तिहान खत्म नहीं हुई, मेरे को नौकरी मिला पत्रकार बनने का. So when a lot of people ask me, why did you become a journalist? आप क्यों पत्रकार बना? तो मैंने बोला, all credit should go to Indira Gandhi and her son Sanjay Gandhi. I could have joined the corporate sector, I could have joined the civil service, मैं एक राष्ट्रदूत बन सकता हूँ. मेरा जो contemporaries है, हमारे जिन लोगों के साथ मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा, वो अलग अलग जगह में हैं. भारतवर्ष के राष्ट्रदूत, अमेरिका का राष्ट्रदूत भी थे. So I decided to become a journalist in 1977. It's been 46 years. और मैं अलग अलग संस्थाओं में काम किया. मैं लगभग 30 साल नौकरी किया. उसमें बहुत सारे संस्था थे जो जैसे अखबार थे, बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, द टेलीग्राफ, दैनिक अखबार कलकत्ता का. 1986 I moved to the worst part of the whole of India. That is the राष्ट्रीय राजधानी, सबसे दूषित जगह. It is the most the most polluted, not just the suspended particulate matter in the atmosphere. It is one of the most polluted cities in the world. The minds of people are extremely polluted. वो लोगों का दिमाग है, वो उसमें वो भ्रष्ट है लोग वहां पे. So I've been a journalist. It's now been, then I worked with the Pioneer, which was at that time launched by the late Vinod Mehta. After that, for 6 years, I became a full-time idiot on the idiot box. मैं एक छोटा टेलीविजन के पर्दा में कुछ बक 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 करता हर रोज. When was this? This was 1995 to 2001. I then headed an educational institution for 6 years. After that, from 2007 onwards, I've been on my own, an independent, a freelancer, except for a brief period of 15 months between April 2016 and July 2017, when I was the editor of the Economic and Political Week. फिर उसके बाद मैंने इस्तीफा दिया और फिर वापस वहीं पे. मैं स्वाधीन, स्वतंत्र पत्रकार हूँ. मैं सिर्फ लेख नहीं लिखता हूँ, मैं छोटे वीडियोस बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता हूँ. मैं 3 भाषा में काम कर रहा हूँ, अंग्रेजी, हिंदी. मेरा तीसरी और सबसे कमजोर भाषा है हिंदी. আমি মাঝে মাঝে বাংলায় বলতে পারি, আমার মাতৃভাষা বাংলা, আমি বাংলায়ও কথা বলি. So I have been working in 3 languages. My main areas of interest are really the political economy of India and the world, and the working of the media, the working of the lok madhyam, the ganamadhyam, the mainstream media, जो मुख्य धारा में है, जो मूल धारा में है. I've been a part of it and I've been out of it. And I continue to be a part-time teacher of a course at the Indian Institute of Management in Ahmedabad. I'm a visiting faculty member. I've taught there continuously every year for the last 19 years. But every year is a new year, just like every day is a new day. So I don't know whether I will be again teaching and when I'll be teaching. Be that as it may, मैं कोशिश किया सीखने के लिए भारतवर्ष का जो प्राकृतिक जो संसाधन है, our natural resources,
how they have been mispriced, how they have been misallocated. आप दर्शक को आप बताइए, मेरा वेबसाइट चले जाइए paranjoy.in. I made documentary series on coal mining in Jharkhand, illegal iron ore mining in Karnataka and in Andhra Pradesh. I've written a book on natural gas. It's called Gas Wars, Crony Capitalism and the Ambanis. वो मराठी में भी आए हैं, हिंदी में भी आए हैं. तो 9.5 साल हो गया मैं खुद प्रकाश किया. I have published about 35 books. I've written or co-authored about 8 books, and I have been, barring 3 of them, I have published my own books. The 3 which have not been published is a book on coalition politics by Sage, a textbook on media ethics by Oxford University Press, and of course, a book published by Penguin Random House, which is about Mauritius, the India-Mauritius double taxation treaty. It is called Thin Dividing Line. And the subtitle of the book is how India, it's called simply India, Mauritius and Global Illicit Financial Flows. और ये शुरू किया मैंने एक वित्त चित्र बना के, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के, और उसके बाद किताब आया इन दिसंबर 2017. मैं बहुत कुछ अपने बारे में बोल दिया. आपके दर्शक को बोलिए मेरा वेबसाइट में चले जाएगा, एक लंबा बायोडेटा भी है, हमारे सीवी है. जरूर. मैं एक्चुअली पहले से आई वाज जस्ट अवेयर ऑफ योर जर्नलिज्म वर्क एंड योर बुक वर्क, बट देन फॉर दिस इंटरव्यू जब मैं पढ़ने लगी, मैं वाज फील सो इंटिमिडेटेड कि आपने इतना काम किया है एंड इतना कम समय. मैं वरिष्ठ नागरिक बन गया. वल्ली मैं बूढ़ा आदमी, मैं वरिष्ठ नागरिक, मेरा उम्र 68. I just turned 68 2 days after the Delhi police visited my home at 6:30 a.m. in the morning. और हाँ, I've been working for 46 years. आपने जर्नलिज्म शुरू किया इमरजेंसी? नहीं, just after the emergency. The emergency lasted 21 months. 21 महीना आपातकालीन स्थिति इंदिरा गांधी का सरकार ने जारी. लगभग 18-19 महीना के बाद बहुत सारे पत्रकार लोग थे जो जेल के अंदर, वो बाहर आ गए थे. और मई 2077 में इंदिरा गांधी चुनाव किया और उन्होंने चुनाव हार गया. ये अलग बात है कि जनवरी 1980 में वापस आ गया भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बन के. फिर भी उस समय और आज में बहुत फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है. ठीक है, उस समय एक साथ चला गया सारे पत्रकार, सारे विरोधी दल जेल के अंदर. एक घोषित आपातकालीन स्थिति था. इट वॉज अ डिक्लेयर्ड इमरजेंसी where your civil rights were circumscribed. आज हम जो देख रहे हैं एक तरह से अघोषित इमरजेंसी. it's not a declared emergency. एक अघोषित आपातकालीन समय हम देख रहे हैं. किसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो सत्य में है, एक के बाद एक करके कानून का उपयोग, मैं कहूंगा दुरुपयोग करके, एक एक संस्था का उपयोग, मैं कहूंगा दुरुपयोग करके, सिर्फ पत्रकार के मुंह बंद करने का कोशिश में है. सिर्फ इतना नहीं, all those who speak against the ruling regime, उनको सोशल मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं कि आप देशद्रोही है, यू आर ट्रेटर्स टू द नेशन, आप राष्ट्रद्रोही है. The old law on sedition in the Indian Penal Code, which was enacted by the British, 100 साल से ज्यादा, it has been used more frequently in the last few years than in a long time. और क्या फर्क है? बहुत सारे फर्क है. देखिए, जो भी सत्य में रहते हैं उनमें
सहनशीलता नहीं रहता. Whoever is in power, they are not tolerant towards their critics, be they political opponents, be they journalists. मगर आज सिर्फ सहनशीलता का बात नहीं है. आज जो सत्ते में है उनके मन के अंदर एक प्रतिहिंसा, एक बदला लेने का मनसा है. They are vengeful. So, agencies like the Income Tax Department, the Central Bureau of Investigation, the NIA, the Narcotics Control Board, the Income Tax Department, they've all been misused to target journalists. And the most recent such example is what has happened to people associated with the portal NewsClick. That includes me. Do you see this as part of a much bigger design, a much bigger plan, or is it just reacting to criticism? The bigger design is to have a chilling effect. ठीक है, आप बाकी लोग का भी मुंह बंद करने का कोशिश कीजिए, उनको डरा दीजिए कि देखिए हमने 50 लोगों के घर में सुबह 6:30 बजे पहुंचा, उनका लैपटॉप मैंने जब्त कर दिया, उनका मोबाइल फोन जब्त कर दिया, उनका पेन ड्राइव ले लिया, मैं उनका पासपोर्ट ले लिया. आपको भी कर सकता हूं. So this is a message going out to all those who do not toe the line, that this is what can be done to them. देखिए आज वैसे भी भारतवर्ष के जो लोक माध्यम है, जो अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सरकार का गुणगान कर रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं उठा रहे. I mean, let's be straight. These people, my own journalist brothers and sisters, they're not asking questions to those who are in positions of power and authority. They are criticizing the opposition, not the ruling dispensation. This amazing inversion of roles is unique. Let me add, why is this happening? This because this atmosphere is something that has started from the people at the very top. मैं आज कह रहा हूं आपका दर्शक के लिए कि भारतवर्ष की एक ही प्रधानमंत्री, उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी. वो अकेला एक प्रधानमंत्री जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस ने किया, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां कोई भी पत्रकार उसको कुछ भी सवाल उठा सकते हैं, अनस्क्रिप्टेड, स्पॉन्टेनियस. उन्होंने वॉशिंगटन आके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब उन एक साथ बैठा तो एक सवाल लिया, और जो महिला सवाल उठाया बाद में सोशल मीडिया उनके पीछे ट्रोल्ड. शी वाज विशियसली ट्रोल्ड because of her background, because she asked a question of Mr. Narendra Modi. In 2019, जब 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी जी वापस आया, 2 बार शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री के पद शपथ ग्रहण का पहले भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर में बहुत सारे पत्रकार थे, बहुत सारे सवाल उठाए. उनका बगल में बैठे थे हमारे होम मिनिस्टर, हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी. वो सारे सवाल का जवाब उन्होंने दिया. इसका मतलब क्या है? मोदी जी चुन के लोगों को इंटरव्यू देते हैं. ठीक है, इसमें रजत शर्मा जी है. रजत शर्मा वाज ऑलवेज a person who was part of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. He, as a student, he was my contemporary at the University of Delhi. He was a member of the ABVP, the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. So I'm not surprised he's given it to Rajat Sharma. But there are a whole bunch of other people, notably Arnab Goswami, Anjana Om Kashyap, Sudhir Chaudhary, Deepak Chaurasya, and so on and so forth. They ask him goody questions. ऐसे सवाल उठाते हैं कि मोदी जी, you work so hard. मोदी जी, I mean,
No critical questions are, no follow-up question. जो अदालत में हम कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग, आपने कुछ जवाब दिया, उसके ऊपर एक और सवाल उठाइए. So they seem to me, and not to me, to several other people, that these interviews were given to a select few journalists because they would not ask him difficult questions. They were almost pre-scripted. Wait. Not only that, मिस्टर मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, अभिनेता को भी समय दिया सवाल उठाने के लिए. उसमें एक जाने माने अभिनेता है अक्षय कुमार जी, वो एक समय कनाडा का नागरिक थे, तो वो भी मोदी जी से सवाल उठाया कि मोदी जी, मेरा ड्राइवर पूछ रहे हैं आपसे, आप आम कैसे खाते हैं, आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं. Now if this can be asked among several other questions, and Mr. Modi answers these questions, he smiles, he laughs, then you can, I don't need you to tell you or your viewers anything else. If this is the state of the media, if this is the state of the way he allows people to interview him and does not allow others to interview him, let him give an interview to Ravish Kumar, among others. Let him answer his questions. He last gave an interview to Karan Thapar and Rajiv Sardesai a long time ago, before he became Prime Minister, while he was still officially the Chief Minister of Gujarat. तो देखिए, ये माहौल बन जाता है. And that is, you cannot ask questions to the Prime Minister. And difficult questions, tough questions. What does this mean? I think it's not good for him. The media has a role to play. It does hold truth to power. It holds accountable those who are in positions of power and authority. It exposes what is wrong with our society, what is wrong with the administration. Now, if you don't want to hear any of this, I think I say it all sincerity to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, that you are losing out. You call India the mother of democracies. We are the world's largest democracy. Sheer numbers. 68% of those eligible to vote in 2019 voted. Of those who voted, 38% voted for the BJP, and you add another 7% voted for the National Democratic Alliance. तो भारतीय जनता पार्टी आज वो एनडीए जो गठबंधन था, वो एनडीए है नहीं. वो अलग अलग लोग अलग अलग रास्ता में चले गया. नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड कहीं चले गया, शिवसेना टूट गया, एनसीपी अलग हो गया, दो भाग हो गया. शिरोमणि अकाली दल कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कळागम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ये मुझे हमें मालूम नहीं. मगर I'm telling you something very simple. We haven't had a census in this country from 2011. जनगणना नहीं हुई. But let's assume that the proportion of Hindus in India's population of 1.4 billion is the same, roughly 82%. So let's say half the Hindus of this country have voted for Mr. Modi. But Mr. Modi has not got the vote of the other half. And the remaining 20% odd. His success is because he's converted India's multi-party democracy into an American-style two-person contest. इनमें उन्होंने सफल हुए, इसीलिए 2014 के बाद 2019 में वापस आ गया. उन्होंने 32% से उनका जो वोट का शेयर 38 बन गया. इसके पुलवामा हुई थी. तो अभी भी 8 महीना के बाद आपको भी मालूम पड़ेगा कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसका क्या नतीजा होगा, क्या नहीं होगा. इसके ऊपर मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं. मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं. ये सारे जो चैनल्स हैं, ये जो बोलते हैं इतना प्रो एस्टैब्लिशमेंट बातें करते हैं, वो प्रेशर में आके करते हैं कि एक्चुअली देखिए अलग अलग जगह में हाउ डज इट वर्क. अलग अलग लोगों अलग अलग तरीका उनका व्यवहार होता है अलग अलग कारण के लिए. कुछ लोग उनका विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी, वो अपना दे आर आइडियोलॉजिकल अलाइन्ड. कुछ लोग हैं नौकरी के लिए जो उनका मालिक कह रहे हैं वही कर रहे हैं.
और सबसे बड़ा बात है कि सरकारी विज्ञापन के ऊपर ये सारे बड़े बड़े संस्था निर्भर करते हैं. So he who pays the piper calls the tune. तो अगर आपका पैसा आ रहा है ये बड़े बड़े सरकार, केंद्र सरकार से, पब्लिक सेक्टर कंपनी से, तो आप सिर्फ सरकार का गुणगान करेंगे, सरकार के खिलाफ आप सवाल नहीं उठाएंगे. सो दिस इज बट ऑब्वियस. और आज हम देख रहे हैं किस तरीका से पूरा माहौल बदल गया. यू लुक एट हाउ जर्नलिस्ट, हाउ दे हैव हैड टू फंक्शन. Journalists who expose corruption are put behind bars. Journalists who ask questions are threatened. There are several studies that have been done, including by international organizations, which will show you. First information reports have been lodged. Legal cases have been lodged, including defamation cases. I happen to be the only citizen of India who is currently fighting 6 cases of defamation, which has been lodged in different courts, 5 in Gujarat, 1 in Rajasthan, by one of India's richest men who happens to be close to the Prime Minister, and his name is Gautam Adani. That's one way. Look, journalists have been intimidated. Journalists have been put behind bars. So there are several kinds of pressures to a journalist who's trying to do her or his job. And there are several studies that have shown how India's position in different countries in the world, in terms of press freedom, media freedom has come down. In terms of indicators of democracy, they have come down. So these are linked. If media freedom declines, I do believe it reflects the state of democracy in our country. हमारे देश के जो लोकतंत्र है उसका हालत यही हो गया. So what is life like as an independent journalist? You talked about the media in general, but as an independent journalist, I am privileged. I am privileged. मेरा अपना घर है. मैं 10 जगह घूमता रहता हूँ. आप जैसे व्यक्ति हमारे साथ साक्षात्कार करते हैं. ठीक है. I am privileged. आप देखिए हमारे देश में, छोटे शहर में, गांव में कितने सारे पत्रकार, मेरा भाई है, मेरा बहन है, जो आज उनके काम करने में कितना उनका दिक्कत हो रहा है, कितना मुसीबत हो रहा है. उनको बोल रहे हैं आप ये सब बंद कीजिए, आप मुंह बंद करके रखिए, आपका तनख्वाह नहीं मिलेगा, नहीं तो आपका घर में रसोई में आपका आग बंद हो जाएगा. आप कैसे आपका बच्चा का स्कूल के जो फीस देना है कैसे देंगे. इस तरह से अलग अलग, कभी कभी ये मीडिया संस्था का मालिक ऐसे दबाव करते हैं, कभी कभी सरकार का दबाव आ रहा है, कभी कभी स्थानीय गुंडे अपराधी लोग का दबाव आते हैं. You expose crimes, the criminals who have the support of those who are in power, the politicians, the civil servants. So I regret to say, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 46 साल पत्रकारिता के बाद वही आप जो सवाल, इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था इमरजेंसी से, we have gone back in terms of India's communal relations, Hindu-Muslim relations. We've gone back 80 years in terms of our media, the state of the media, 1975 till today. It's not yet 50 years, but we have gone back there. In a sense, the situation is different, but in many respects, it's worse. If people had to help, you said you are privileged, but there are so many other journalists. If people had to help or wanted to help support free independent media, what do you think they should do? They should. Where should they find out information? It's all available. Everything is in the public domain. All these people, Ravish Kumar is well known. I am well known. Forget it. There are dozens of other journalists who want to do their work. Visit them. There are a long list of people who are working in different parts of India, who are being harassed, who are being intimidated. Support them.
You see, many of them on YouTube and these big social media platforms don't help very much. आपके पास कितना पैसे है ये तो YouTube आपको नहीं बताएंगे ना. YouTube आपका जो कार्यक्रम दिखाया और आपको बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत लाखों लोग आपका प्रोग्राम देखा, कितना विज्ञापन आ रहे हैं आपको मालूम नहीं है कि YouTube को कितना विज्ञापन मिल रहा है और आपको कितना उसका क्या 10% दे रहे या 20% दे रहे या 30% या 50%. You see, they have a monopoly. Their algorithms, they will never tell you. So this is a separate subject, but the monetization of content is not easy. So all those who are doing crowdfunding, all those who are asking for donations and subscriptions, if you believe in a free and independent media, then that's the way you should take it forward. There are organizations that are supporting journalists by providing them legal aid, those who have cases against them. So there are various ways of doing it. That there are several associations, several organizations within the country. And life is not easy for them. Life is very difficult. Look, even lawyers are threatened. Even lawyers are being intimidated. There are many examples that can be given. So, when you are living in a society where those who are in positions of power and authority are not just intolerant but vengeful towards its critics, this is what has happened. This is what's happening in India. With so many platforms available, Paranjoy, do you see the mainstream media and just the media, forget the mainstream media, news media being disrupted in a way? We have content creators who talk about. So how do you see this panning out? Difficult to say what will happen in the future. भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल है, बट वल्ली जो भारतवर्ष की विविधता है, एक समय हमारे देश के जो मुख्य धारा में जो लोक माध्यम था उनका विविधता उनके अखबारों में, उनका टेलीविजन चैनलों में, उनका रेडियो स्टेशन में हम देखते थे. Once upon a time, that the diversity of India, the what makes India unique among all the 200 countries on this planet, 200 odd countries, is the sheer diversity. Our linguistic diversity, our cultural diversity, our diversity in every respect, our geographical diversity. We're the only country in the world with 17 languages on our currency note. Be that as it may, the point is, the media no longer reflects the diversity. The media was always big. We were the only country in the world with close to 100,000 publications, printed publications. We are the only country in the world where the state broadcaster, the radio broadcaster, All India Radio, Akashvani, broadcasts in so many languages and dialects. But we are also perhaps the only, I don't know about Rwanda or Radio Rwanda, but news and current affairs is not allowed on the radio. You may be a private FM channel or a community radio station, but you cannot broadcast news unless you source it from All India Radio. This has been going on for a long time. This is how the government has protected its turf. Television. Until 1991, the government had a monopoly on the television airwaves. Today, we are the only country in the world with something like 900 odd television channels who have got permission to uplink and डाउनलिंक. ये जो अनुमति इनको मिला है हमारे INB मिनिस्ट्री में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और इसमें लगभग 400 के आसपास चैनल अपने आप को कहते हैं हम खबरों का चैनल. सचमुच क्या खबर देख रहे हैं और खबर दिखा रहे हैं और कुछ दिखा रहे हैं. आप नाच गान तो भूल ही जाइए, अब भूत प्रेत का कहानी देखिए, दो नाग नागिन का शादी. Anyway, I can go and give you a 1-hour lecture on this subject, but the point is when you come to the social media, when you come to the web, आप देखिए, आप numbers देखिए, भारतवर्ष में 140 करोड़ लोग रहते हैं. आप TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेबसाइट चले जाइए. एक समय 120 करोड़ सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, वो थोड़ा कम हो गया, ऊपर नीच होता है. People don't use their phones, people have two mobile phones. मगर समझ लीजिए
कि एक समय ये शहर का बात था, बड़ा शहर का था, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, फिर छोटा शहर में, अब छोटे गांव में, कस्बाओं में, remote places, there are more Sims than human beings. This is what the social media has done. There are 500, at least 500 million users on WhatsApp. And WhatsApp is the principal source of propagating disinformation, misinformation, hateful information. Behind every lynching of a person in India in the recent past, there is a WhatsApp message. WhatsApp says we are helpless, end-to-end encryption. Facebook, look at how Facebook has been weaponized. और मार्क जकरबर्ग सब खामोश है. The opposition alliance INDIA has written an open letter to Google and Meta, Alphabet and Mega, telling them do something about it. Your platforms, you are monopolists. You are giant international conglomerates. Today you have the power not only to know what people are reading and listening to and viewing, आपके पास आज वो क्षमता है कि लोगों का मन के अंदर क्या होगा, उनका स्वभाव क्या होगा, भविष्य में क्या करेगा. सिर्फ ये नहीं कि हम ये गाना सुनेंगे, ये फिल्म देखेंगे, ये खाना हमें पसंद है. Who will you vote for? आपका जो राजनीतिक विचारधारा. Today, the giant international conglomerates who are based in your part of the world, Valli, they are playing a terrible role in polarizing Indian society, including the spreading of not just false and hateful speech, but Islamophobia. You have taken on the most powerful Adani and company. I have. Do you get threats? And how do you deal with Valli, I have not taken on. What is your process of dealing with? I've not taken on anybody. I'm doing my job. Of But course if you are, people, but in the eyes of everybody else, if others are still working, the rest of the systems are not working. Here is an independent journalist who is, I told you at the beginning, I'm a student of the political economy of India. I try and understand how crony capitalism works, how oligarchies function. So I do my job. I have written about all major corporate conglomerates in this country. And it's not just about Mr. Gautam Adani. I've written about the Tatas, the Birlas, the Ambanis. I've written books. I've written several articles. I continue to write about it. If my view is that we see if there is something that's happening which we believe is not correct, not fair, questionable, it's our right to ask questions. So I haven't taken on anything. I'm just reporting. I report facts. You are welcome to disagree with my opinion, So that you're wearing headphones. Fact. You should take off your headphones. Opinion. I'm wearing a blue t-shirt. Fact. You don't like my blue t-shirt. That's your opinion. It doesn't matter. These opinions can change. But I'm saying facts. And what is factually correct and how we interpret them, how we analyze them. That's what journalism is all about. And to provide that information to as many people as possible. So many years in journalism, does anything surprise you anymore? Lots of things. Every day is a new day. I could never have imagined on the 3rd of October, hundreds of police personnel, men and women, would visit 50 plus homes all over the National Capital Region at 6:30 in the morning. We were told about the midnight knock, emergencies, midnight knock. This is like your early morning alarm. I never thought it would happen. Maybe I'm naive, maybe I'm a fool. You were not expecting it at all? No, I wasn't expecting 9 police personnel to come to my home at 6:30 in the morning. Surely I was not. It was nice talking to you. Thank you. Thank you, Valli. Wish all the viewers and I wish all the viewers and those who are listening to our conversation, or all of them who are listening to this conversation on the 4th dimension, do your bit for independent journalism in India. That's my request to you. That's my appeal to you.
there are some very fundamental, basic things that everyone needs to know about democracy and freedom of speech and journalism and all of that, and that is what we aim to cover. Keep well. Wish you all the best. Wish Aviral and Prayas and your colleagues all the very best. Have a good day. Thank you.